ठीक है, चलो रिवाइज करें। हेलो हेलो, कौन देख रहा है? कहाँ से देख रहे हो? स्प्रिंग बूट का पढ़ना है ना मुझे। मेक द डेवलपमेंट ऑफ जावा स्प्रिंग ओपन सोर्स like a GTK framework that can be also be considered as a framework as it houses various frameworks like dependency injection. The element of the Spring framework is a feature of application infrastructure support. Spring focus providing the plumbing on the specification. ठीक है, fully provision application level business logic unnecessary ties to storage deployment environments. Okay, application development is reliable, scalable, and very simple to build and maintain. Due to its fast feature and flexibilities, ओके ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क? स्प्रिंग इज पावरफुल ओपन सोर्स लॉजिक बफर light for Java framework because basic complexity of the developing enterprise within this framework is also called the framework. There are 20 modules which are generalized to the following types: core container, data access, web POP, टेक्सटिंग, this. तो इसमें क्या है? कोर कंटेनर में बीन और कॉन्टेक्स्ट कोर अब ये में सर्वलेट, वेब सर्वलेट, पोर्टलेट, ORM, KDBC इसको हाँ ये ठीक है। ठीक है। स्प्रिंग हैंडल्स ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर aspects with the program focus on application ठीक है। What are the features of Spring? Spring provides layer application along with providing a robust and cohesive framework of CTV application development. The application part of Spring supports verified development by ensuring separation of services. Verified development of ठीक है। Spring provides highly configurable framework which has the ability to switch to other framework easily. Highly configurable and reusable ठीक है। Provides provision of creation management ठीक है। Spring has special design data which is known as IOC. There are objects to give the ability that they are looking for creating object ठीक है। Spring provides generic abstraction layer for transaction management which is also effective for ठीक है। कौन देख रहा है रे? दो लोग कौन देख रहा है? I do translate system phone by JDBC have another framework like consistent transaction ठीक है। What is Spring configuration file? Configuration file ठीक है। File is basically an XML file that mainly contains the classes information and describes how the classes are configured and linked to each other, which are verbose and cleaner ठीक है। What do you mean by IOC container? Forms the core of the Spring framework. The Spring framework continues किसका है? The Spring framework uses dependency injection for managing the application component by creating objects, wiring them together along with configuring and managing their overall life cycles. Okay, the instruction of the Spring container to do tasks can be provided either by XML communication, Java interpretation, or Java code. Okay. Metadata, Java Pojo objects
Spring container and usable application metadata. What do you understand by dependency instance? The main idea in dependency is that you don't have to create all objects, but you have to describe how they should be created. The component solution is not to be connected by us in code directly. We have to describe the services are needed by which component the configuration file. The answer container string will wire them together. ठीक है. डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? bean1 IOC container dependency injection bean2 creation XML Java integration. Okay. In Java, two major groups of dependency: constructor injection, setter injection. Execution contains the number of views where each element represents a dependency on the class. Setter injection ठीक है. Explain difference between setter injection. In construction, partial injection is not allowed, where it is allowed in partial injection. Okay. Injection does not override the setter property, where the same. It's not true. The constructor injection does not override the setter property. Creates new instance if the modification is done. The creation of new instance is not possible in instance. Okay. In case the bean has many properties, then constructor injection is preferred. The bean has many properties, then if has few properties, setter injection is preferred. This is interesting. इसको लिख लेते हैं. Constructor injection setter injection. In construction injection, partial injection is not allowed. It's allowed. ठीक है. Does not override setter property. Override constructor property. ठीक है. Creates new instance if any modification is done. Does not create new instance. Preferred when many properties is there. For in few properties. ठीक है. String beans क्या होती है? They are the objects forming the backbone of the user application and are managed by the Spring IOC container. Backbone of the user application. ठीक है. Managed by IOC container. String beans are instantiated, configured, wired, and managed by IOC container. Beans are created with the configuration metadata and the user supplier to the container. By means of XML Java notation. ठीक है. छोड़ दो. What is the configuration metadata provided to the Spring container? Okay. Yeah. There are three ways of providing the configuration metadata. There are as follows: XML based configuration. The bean configuration and the dependencies are specified in XML configuration files. They start with a bean tag as shown. Bean tag. Okay. Then annotation based. Instead of XML approach, the beans can be configured into component class itself by using annotation on the relevant class method or field declaration. Annotation variant is not active in Spring container by default. This
has to be enabled in Spring XML configuration file as shown. Bean, then definition go there. Okay. Java based configuration. Spring framework include key features as part of new Java configuration support. This make use of configuration annotation class and bean annotation method. Note that bean annotation has the same role as the bean element. Class annotated with configuration also defined in enter bean dependency by simply calling other bean methods. Simply calling other bean methods. Okay. तो दो लोगों ने लाइक किया है. नॉट फेयर. ठीक है. कहाँ से देख रहे हो आप लोग? बात कर सकते हैं क्या? आयुष भाई लाइक डन. थैंक यू दीक्षा. कैसी हो? सोई नहीं यार तुम? 1 बज गए. क्या कर रही हो? ये तो ठीक है यार. उसको भी ले आते नैना को, छत्र बात कर लेते हैं. स्कोप सेशंस क्या होते हैं? स्कोप सेशंस होते हैं सिंगलटन प्रोटोटाइप रिक्वेस्ट. थैंक्स यार, थैंक्स. जल्दी जॉब होता है मेरी, फिर मज़े दोबारा से. पिछले साल बहुत घूमा यार. ठीक है, इस साल स्ट्रगल मोड में आ गया हूँ. नैना जी बिजी हैं अभी. कहाँ बिजी है नैना जी? सिंगलटन द स्कोप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ यूजिंग वुड बी सिंगल इंस्टेंस पर कंटेनर. हम भी लाइव करने जा रहे हैं. ओह, आप लाइव कर रही हो इस टाइम पे? ठीक है, कोई नहीं. मेरी अभी तो 2 बजे तक पढ़ूंगा मैं, फिर देखता हूँ, उसके बाद आ जाऊँगा मैं थोड़ी देर के लिए. बढ़िया है यार. आज देखते हैं कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं. मेरे 1000 हो जाए जल्दी. लाइक करने के लिए आई थी. अरे थैंक्स यार. एक बार फ्री हो जाऊँ ना ये सब चीज़ों से, तब प्रॉपर लाइव करूँगा मैं. अभी तो मुझे टेम्पर भी ठीक कराना है यार. ब्लर सा आ रहा है. कल चेंज करवाऊँगा. आज गया था, मिला ही नहीं. कल कितने मिले? कल तो यार 5 मिले थे बस. तुम्हारे को तो ज़्यादा मिलते हैं, मेरे को नहीं मिलते इतने. कल तो आ गए थे 5, पता नहीं कैसे, बट आ गए थे. कल जानने वाले भी आ गए थे ना 1-2 लाइव में, तो इसलिए शायद बूस्ट हो गया था. The scope for a single bean definition can be any number of instances. The scope will be related to request. The scope of the bean session, global session. ठीक है. The last is for the user use web user. अगर बॉडी मुझे भी सही में इतने ही मिले थे. मुझे भी बस 2 वीक हुआ लाइव करते. सिर्फ 2 वीक हुआ है मुझे ना. ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं, पता है मेरे को. ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं. जो पहले आते थे ना, काइंड ऑफ व्यूअर्स कह लो, दोस्त कह लो, सब बिज़ी हो गए आज की डेट में. कोई नहीं आता. मेरी तो लाइफ में लड़ाइयाँ भी हुई है. लोगों ने बहुत मिस जज किया है, यू कैन से. तो अब वो लोग नहीं आते चिढ़ के मारे. कुछ आते हैं फालतू बोलने के लिए, बट ठीक है. कभी हो जाएंगे फेमस तो वही याद करेंगे. Bean life cycle in Spring. Bean factory container the user follows. Oh, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है. Bean life cycle. मेरी कल लगे 1 रुपये टच होने वाले थे, बट मैं एंड कर दी थी जल्दी. और कल 47. भाई साहब 47, क्या बात है. नाइस. मेरे तो यार 100 दोस्त तक जाते हैं मुश्किल से. वो ये रहता है ना कि जितने ज़्यादा लोग तुम्हारी स्ट्रीम में रुकेंगे,
उतना ही यूट्यूब बूस्ट करता है तुम्हारी स्ट्रीम को। जैसी मेरी फ्रेंड है, उसको आई गेस 1 मंथ हो रहा है, उसके लिटरली अब 9 के 7 के व्यूज़ जाते हैं, और एक टाइम पे उसके 100 तक मतलब लोग रुकने लग गए हैं, और लाइक्स भी अब उसके 200 जाते हैं, जबकि सिर्फ उसे 1 महीना हो रहा है। तो थोड़ा है यहाँ पार्शलिटी लड़के आते हैं लड़कियों को देखने के लिए। अरे थैंक्स यार, थैंक्स, तुमने बोल दिया इतना बहुत है यार। जल्दी तुम्हारे भी 1K हो जाए, तुम्हारे तो हो जाएंगे, वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, 1K तो हो जाएंगे तुम्हारे, वॉच टाइम इम्पोर्टेंट है। बीन मैंने जब स्टार्ट करी थी लाइव तब 400 सब्सक्राइबर थे, अब 2 वीक में 1K होने वाले हैं। क्या बात है यार, 2 वीक में 1K होने वाले हैं, नाइस यार। आ जाए कल में हो जाएंगे 1K सब्सक्राइबर मेरे। अरे नाइस नाइस, बढ़िया है यार, अच्छा है। लाइव से वॉच टाइम अच्छा मिलता है। मैंने तो लोगों को देख के स्टार्ट किया, मेरे थे मैं बताता हूँ 190 थे आई गेस मेरे, या 132 थे, मुझे याद नहीं है, ऐसे थे, पर 100+ ऐसी कुछ थे। तो मैंने लोगों को देख के स्टार्ट किया, तो करते करते अब जाके 2-3 महीने में जाके 400 हुआ है पर ठीक है, मैंने भी लोगों को देख कर स्टार्ट किया था। हाँ वही ना, मैंने भी लोगों को देखा यार, लोग लाइव चला रहे हैं, बहुत लोग देखने आ रहे हैं, तो मैंने कहा यार एडिटिंग वगैरह तो मुझे आती ही है, चलो ये भी ट्राई करते हैं, लाइव की वॉच टाइम मिलने वाला है इससे अच्छा, तो मैंने इसलिए ट्राई करा। जॉब लग जाएगी तो फिर बिज़ी हो जाऊँगा, बट ठीक है, तब ट्राई करूँगा कि मैं आ सकूँ। स्प्रिंग कंडीशन ठीक है, इसको छोटे छोटे में लिखना पड़ेगा यार। ऐसे कंटेनर इंस्टेंटिएट्स बीन Spring will publish all the property using the dependency expression. The bean factory contains calls. The factory then calls set bean by passing the instruction if bean processor with the bean, then ये भी बेकार है। If an init bean is specified then it is called. Lastly यार ये तो बड़ा बकवास है। तो वो कहता मैं भी जा रही हूँ लाइव। ओके कर लो आप लाइव। एमल से है, थैंक्स बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। चलो करो आप लाइव, मैं 2 बजे तक ख़त्म करता हूँ, फिर आता हूँ मैं अभी। कितने पेज पर हूँ मैं? 13 पेज पर हूँ, 46 पेज है, 26 तक पढ़ूँगा, बाकी सुबह देख लूँगा मैं थोड़ा सा, उसके बाद आता हूँ। यार ये तो टॉपिक ही बड़ा अजीब है। पॉपुलेट स्प्रिंग लाइफ साइकिल, नेट से पढ़ना पड़ेगा। गूगल जिंदाबाद। Explain spring life cycle in with example. Yes, spring is assembled managed by being that is translated assembled and managed by Springarachi। ठीक है, the instantiation इसमें भी यही चीज़ लिखी है, अरे देखनी पड़ेगी। ठीक है, बीन लाइफ साइकिल का पहला पार्ट होता है इंस्टेंशिएशन। इंस्टेंशिएट करने क्रिएट्स इंस्टेंस ऑफ द बीन यूजिंग द कंस्ट्रक्टर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। 2 लोग देख रहे हैं, नाइस। कहाँ से देख लो आप लोग? सेकेंड, पॉपुलेट प्रॉपर्टीज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्ट वैल्यूज एंड रेफरेंसेस इनटू द बीन्स फील्ड्स और प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्ड
बीन नेम अवेयर इंटरफेस ऑप्शनल है, बीन फैक्ट्री अवेयर ऑप्शनल है. If the bean implements this calls इतना pre-initialization, bean post processor, bean applies any bean processor init method. If the bean implements initializing bean calls this method, bean is ready to use. ये है destroy phase. When the container shuts down, if the bean implements dispose, calls it destroy method. Example, my bean init destroy. ठीक है, छोड़ो इसे, बेकार टॉपिक. इंस्टेंट क्रिएट करा, पॉपुलर प्रॉपर्टीज करा, बीन नेम अवेयर सेट, बीन नेम अवेयर सेट, बीन नेम अवेयर. गलत लिख दिया रे. ठीक है, बीन नेम अदर्स डिवाइसेस. कौन लाइक कर रहा है? ब्लैक डूम का ब्लॉग. हेलो हेलो ब्रो, हेलो हेलो, कैसे हो आप, कहाँ से हो? व्हाट यू स्टार्ट अंडरस्टैंड बाय बीन वायरिंग. बीन वायरिंग क्या होता है? व्हेन बीन्स आर कंबाइन टुगेदर. ये हार्ट वगैरह कौन भेज रहा है? कोई तो नोन होगा पक्का ये. When beans are combined together within the spring container, they are said to be wired. Combined together within the spring container, they are said to be wired, and this phenomenon is called bean wiring. The spring container should know that beans are needed and how the beans are dependent on each other while wiring beans. This is given by means of XML. Bean wiring. भाई आज मेरा ALV मेन हो गया है मुंबई बोर्ड से. अरे क्या बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, कॉन्ग्रेट्स यार. क्या करने वाले हो अब आप? आगे के कोई प्लान्स? छोड़िए, टॉपिक तो बकवास है. हाँ, व्हाट इज ऑटो वायरिंग एंड नेम डिफरेंट मोड्स ऑफ इट. ऑटो वायरिंग, डिफरेंट मोड्स ऑफ इट. अब DV मेडिकल होगा. अरे नाइस यार, डॉक्टर बनोगे, कॉन्ग्रेट्स ब्रो. आई एम रेडी. नाइस ब्रो, नाइस, बढ़िया यार, मेहनत रंग लाई तुम्हारी. The C container virus relationship between the application beans. Spring Mets collaborator resolve which bean has to be wired automatically by inspecting the contents of bean factory. Okay. No, this means no auto wiring. It is a default setting is by name by type. Oh, ये अच्छा है. By name by type. Constructor auto detect. This means no auto wiring, any default setting. An explicit bean referred should be used for. Okay, the dispensing injection according to the name of the bean. This matches and wires its properties with the bean defined by the same name as per the configuration. By type, this injects the bean dependency based on type. Constructor injects the bean dependency by calling the constructor of the class. It has large number of parameters. Alternatively, first the container tries to wire using auto wire by the constructor. If it isn't possible, then it tries to auto wire by type. Okay, first by constructor, then by type.
first by constructor, then by type. ठीक है. Limitations of auto wiring. ठीक है. Limitations of auto wiring. मैं भी 14th पेज पे हूँ. Overriding possibility depending on specified using the constructor and property settings that override auto wiring. Override possibility. Data types restriction. Data types restriction का मतलब क्या है? Primitive data types, strings and classes can't be auto type. Data type restriction. अच्छा. Data types, string, classes. हेलो हेलो एमडी ब्रो. हेलो हेलो. मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया ब्रो. याद था मेरे को. कैसे हो ब्रो? Cannot be auto wired. चलेगा क्या? थैंक यू. अरे क्या थैंक यू यार. आपने सब्सक्राइब किया था, मैंने आपको सब्सक्राइब बैक कर दिया, तो इसमें क्या थैंक्स ब्रो. बस देखते रहना आप भी शॉर्ट्स, मैं भी आपके देखता रहूँगा. What do you understand by the term Spring Boot? Spring Boot is provides support for rapid application development and gives platform for developing standalone and production ready Spring applications with the need for very few configurations. ठीक है. Explain the advantages of Spring. Yes सर. थैंक्स ब्रो. थैंक्स. और बताओ कैसा गया आपका दिन? बाकी 2 लोग कौन देख रहे हैं? अभी तो आधा घंटा ही पढ़ा यार मैं. आधा घंटा और पढ़ेंगे. अभी तो है 10 pages. Explain the advantages of Spring Boot. Spring Boot helps you create standalone which can be started using java.jar. Doesn't require configuring war files. Standalone which can be started using ठीक है. Spring Boot also offers pinpointed started forms to manual. Spring pointed ये किसका चैनल है जो आपने पिन किया है? अरे कुछ नहीं, ये मेरा ही चैनल है. क्या बोलते हैं, मैसेज नहीं कर सकते ना आप लाइव में, तो आपको दूसरे चैनल से कोई मैसेज टाइप करके मेन चैनल से पिन करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने पिन किया है, ताकि कोई आया नया बंदा तो उसको पता हो कि हाँ रिवीजन कर रहा हूँ. यहाँ से टेक्स्ट नहीं होता ना. Has provision to embed it under the download ready and automatically provide the bit auto configuration which will be dependent on the class path present on the class path. Spring Boot was developed with the intention of lessening the lines of code. It offers production ready support like monitoring and app developed using Spring Boot. Using Spring Boot are easier to launch. Production ready support like monitoring and app developed. Okay, got it. Difference between Spring and Spring Boot. The Spring Boot provides multiple features like dependencies and data binding, exploration, programming, data access, and many more that helps easier development of web applications. Whereas Spring Boot helps in easier usage of Spring Boot by simplifying or managing various loosely coupled blocks of Spring. Okay, it is loosely coupled of Spring which are tedious and have potential of becoming messy. Spring Boot simplifies commonly used Spring dependencies and runs applications straight from a command line. It also doesn't require an application container, and it helps in monitoring several components and configuring externally. Okay. इसका भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ. Simple differences between Spring and Spring Boot. Spring and Spring Boot.
ठीक है. Comprehensive tool that simplifies the self-development validation configuration. Requires a lot of boilerplate configuration. Automation service to reduce setup. Manual configuration needed for things like data source, MVC, etc. Auto configuration database based on dependency. Requires external server like Tomcat comes with the embedded server. Tomcat is more flexible but needs more manual setup. More flexible but needs more manual setup. Predefined is provided by the slower due to configuration work, faster due to no built-in CI support, configure Spring CLI quit when you need full control of operation level development. Okay, got it. What are the features of Spring Boot? Features of Spring Boot. So this is a YouTube video for writing Spring Boot application and work boilerplate code. YouTube allows you to do इसमें क्या लिखा था CLI के बारे में नो बिल्डिंग CLI फॉर क्विक टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग क्विक टेस्टिंग ठीक है एग्रीगेट्स कॉमन डिपेंडेंसी टुगेदर इवेंचुअली इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस टाइम ठीक है वेब एप्लीकेशन है द डेवलपर इन क्रिएटिंग एन इंटरनल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर द डेवलपर डोंट हैव टू मैनुअली सेट अप the making use of this feature. Auto configuration then loading the default configuration according to the project you are working on. This way, unnecessary workflows can be avoided. Actuated for user actuated management endpoint, which helps the developer in going through the application internals, matrix, etc. This is using Spring Boot properly. Logging the security. This is all the application made using Spring Boot properly security. ठीक है. As you mentioned, do internally. As per the Spring Boot documentation, the Spring Boot integration is one point replacement for configuration, enable auto configuration and component scan. Until inside the default attributes. ठीक है. And component scan. This is able to use single integration instead of using multiple integration, thus lessening the line of code. However, Spring provides loosely coupled features, which is why we can use the instruction as per our project needs. हेलो कौन एक बंदा देख रहा है? बात कर सकता हूँ मैं अगर आप मैसेज करोगे तो. 20 पेज तक जाना है. 20 पेज. हेलो गाइस, कहाँ से देख रहे हो? मैसेज कर सकते हैं आप. What are the effects of running Spring Boot application as Java application? Effects of running. ठीक है. The application will run the Tomcat server as soon as it sees that we are running a web application. इसका तो कोई मतलब नहीं बनता. Spring Boot. What is the Spring Boot dependency management system? It is basically used to manage dependency and configuration automatically without the need of specifying the version of any of the dependencies. Without the need of specifying the version of any of the dependencies. ठीक है. What is the possible source of external configuration? Possible sources of external configuration. ये है. Spring allows the developers to run the same application in different environments by making use of the feature of external configuration. This uses environment variables, property files, command line arguments, YAML files, and system properties to mention the required for its corresponding environments. Following are the source of command line properties. Spring Boot support for command line arguments to convert these arguments to properties and then adds them to set of environment properties. Application property by default suggest for the application property file of or its YAML file in correct directory of the application class part root or profile specific properties. Properties are loaded from the application profile property file or its YAML file. The file resides the same location as the non-specific property file in the profile placeholder. Refer to an active profile of an or an environment. How to active Spring profile. How to active Spring
profile in Spring Boot with example. है जो भी नया लाइक करो एंड प्लीज़ बताओ कहाँ से देख रहे हो. ठीक है. स्प्रिंग बुक प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव डेव, फिर हमने डेव फाइल बना दी यूजिंग द कमांड लाइन. ठीक है. इवन environment variable spring active test, active profile test, create the profile application web properties, add dot message is the dev prod property, add dot message application dev, put the dev is active, the dev profile is active, and the red profile annotation. Where is the profile annotation? Active profile test. Let me like to some example using more actions. कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है. एक्टिव प्रोफाइल में टेस्ट बोला इसने एंड यहाँ से अगर हम दे और बहुत मैसेज उठा रहा है. और यूजिंग एक्टिव प्रोफाइल टेस्ट. अच्छा है तो टेस्ट की बात है, छोड़ो. ठीक है. कैन वी चेंज द डिफॉल्ट port? Yes, we can change the default port by adding the property available port. Further, we want to mention when the can you tell how to exclude any package without using the base package filter? Exclude any package without using the base packages filter. इसमें तो exclude आता है ना कुछ, I guess. सही बोला. To exclude any package without using the base package filters. Use exclude attribute while using the notation generate boot application. ठीक है. एक्सक्लूड कर दो ये को. हाउ टू डिसेबल स्पेसिफिक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास. यू कैन एक्सक्लूड फॉर दिस एक्सक्लूड. ठीक है. कौन दो लोग देख रहे हैं जी? 20 मिनट्स में मेरे को 8 पेज पढ़ने हैं. ठीक है. specify fully qualified name as the value of the exclude name by using the exclude name. If the class is not specified on the class path. We can specify the fully qualified. ठीक है. Can the default web server is disabled? Yes, Windows is used to configure web application type by mentioning Spring main web application type none. ठीक है. What are the user request mapping REST controller in Spring Boot?
Request mapping, ठीक है. It provides the routing information and informs the string that any HTTP machine URL must be mapped to the respective method. This provides routing information. Informs कितना होता है 33. हेलो गाइस, हेलो हेलो, कहाँ से देख रहे हो आप? मैं कुछ बता सकता हूँ क्या, अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड हेल्प चाहिए? This provides routing information and informs string that any HTTP request message URL must be mapped to the respective method. So what has to be imported using this annotation REST controller. This applied to a class, marking it as a request handler, thereby creating RESTful web services using Spring MVC. This annotation adds the response body and controller to the class. ठीक है. स्प्रिंग AOP क्या होता है? मैं आ चुका हूँ 21 पेज पे. स्प्रिंग AOP क्या होता है? स्प्रिंग AOP speculator provides similar to OOPS as it also provides modularity. In AOP, community expects and concerns, which are nothing but standalone modules in the application. Some aspects have centralized code, but other aspects may be scattered and dynamical, just like in case of blocking and transaction. These scattered aspects are called cross-cutting concern. Okay, a cross-cutting concern is the financial management, authentication, logging, security, etc. is a concern that could affect the whole application and should be centralized in one location in code as much as possible for security and modularity purpose. Okay. AOP provides platform to dynamically add these cross-cutting concerns before or after or around the actual logic by using the simple pluggable configurations. This results in easily maintainable code. Concerns can be added or removed simply by modifying configuration files and therefore without the need of recompiling complete source code. There are two types of implementing AOP using expect J annotations, using XML file. Expect J annotations. Okay, how? तेरी भैंस की पूंछ क्या चला दिया मैंने? How AOP using Spring Boot with examples. Few AOP annotations. ठीक है. अरे यार ये चल तो नहीं रहा. कौन एक जना देख रहा है? अरे यार MongoDB ऑन कर दिया मैंने. MongoDB ऑफ किया जाए. ठीक है. Common uses of AOP logging, cross to listen execution and behavior before, after, and around the method without modifying the actual method code. Use some common use cases of security check and information logging, etc. Common notices in Spring. Expect requires and contain process logic runs before, after returning, after throwing around a and the AOP dependency if not here. Data service, data expect class before, after device, around the device, after returning. User service and controller.
Okay, got it. What is an advice? Types in an advice implementation of education can be applied to the education. Advices are mainly of 5 types. Advices, ठीक है, where before, after returning, after throwing, before, after returning, after throwing, after releasing is executed if a method exists. If a method by throwing an exception, this method is to be executed if a method exists. By throwing an exception, to use this after part of the means point. Name for edit car and bike. कार BMW M5। बाइक में तो यार निंजा की कोई भी बाइक ले लो। निंजा की कोई भी ले लो, बट मुझे भेजना ज़रूर जो बनाओगे। यस ब्रो। वैसे किससे बनाओगे एडिट? कैपकट से करते हो? regardless this advice is to be executed regardless of means by which a join point exists. The most process around the join point use enter it around annotation. AOP proxy pattern। अबे यार ये टॉपिक तो समझ ही नहीं आ रहा। proxy pattern is proxy where a proxy is an object that looks like an representative but has special functionality to it behind the scenes. Okay, so that's special functionality। ठीक है, एक्टिवेट prostitute pattern and this is created by AOP framework to implement the expects contracts in runtime. Proxy default AOP the standard jaye genuinely created by the standard JDK. Enable proxies are default AOP proxies that enables any interfaces to be proxied rather than interfaces. Require two proxy classes rather than interfaces. In case the prisoner object does not implement an interface, the CGLIB proxies are used by default. ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ। What are the some classes of the Spring JDBC API? Classes of Spring JDBC API। ठीक है, classes of Spring JDBC API। JDBC template, simple JDBC template, name parameter, simple JDBC, insert call enter JDBC template. The most common use is the JDBC another Mondays. Don't appropriate connection statement, start transaction, close connection to execute different queries. All these are handled by JDBC. We can focus on executing the query directly. ठीक है, how can you fetch records by using simple? How can you fetch records by simple JDBC template? This can be done using query method and using the two interfaces that help with this result set extractor. Okay. Fetch records by Spring JDBC template.
two ways. Result set extractor. It defines only one method, extract method that extracts result set instance of the parameter and returns the list. Okay, it has only one method, extract data accept result set instance as parameter and return list. Then है वो मैपर. मैं 5 ही लो रहे यार, आज 5 ही लाइक हुए. वो मैपर इसे मिशन एनहेंस्ड वर्जन है. ठीक है, वर्जन ऑफ RS extractor. This is a lot of code. Allows a map. Allows a map to map a row of the it iterates internally adds up result collection. There was it iterates result set internally and adds it to the result collection. ठीक है. What is Hibernate ORM framework? Mapping application domain similarly has been the most commonly used Java's ORM framework. This is often by using inversion of control by using Hibernate and callback, extending DU support by applying an LP. ठीक है. Hibernate validator framework. हेलो कहाँ से देख रहे हो? About the Hibernate validator framework. The Hibernate validator framework. Data validation is one of the functions you can find data validation. UI net क्यों चला जा रहा है ब्रो? नेट क्यों जा रहा है? So as to good practice, we should try to keep it apart from our business logic. JSR is provide a reference and foundation of Hibernate validator. Okay, ठीक है, no issues. What is Hibernate template class? Hibernate template for Spring transactional management purpose. Hibernate DAO support to get the session from the Hibernate and it's now. However, Hibernate 3.0 onwards, by using Hibernate template class, you can use session factory get current session method to get the current session and then use it to get the transactional management benefits. Hibernate template has the benefit of exception translation, but that can be achieved easily by using @repository annotation with service classes. इसका क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन करंट सेशन लेंगे, ठीक है. व्हाट इज स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क? सीयूसी का आ गया डिलीट बाय 2 पेज और रहते हैं. क्या जो 2 लोग देख रहे हैं प्लीज़ मैसेज करो कहाँ से देख रहे हो एंड लाइक भी कर दो. स्प्रिंग एमवीसी क्या होता है? Spring MVC is request driven framework and one of the core component of the Spring framework. It comes with ready to use reusable components and elements that greatly is developable in building flexible and global using MVC model view controller architecture approach and provides loose coupling between the different phases of application input logic model, input logic business logic controller and UI logic view.
ठीक है, उसमें मुझे other than the over the MVC framework, Spring MVC over the MVC framework. Clear separation of logic, specifically dedicated object for every role. Use logic code with Spring MVC. There is no need for duplicating the code. Existing objects can be used as commands instead of replicating them to extend a particular. Spring MVC framework provides customization, binding, and validation. Also provides customization, column, theme resolution. Spring MVC supports customization, handle mapping, and view resolution through. Spring MVC provides other MVC होगा. What is dispatcher servlet in Spring MVC? Spring MVC is built in around the center servlet called dispatcher servlet that handles all the queue requests and responses. This servlet does a lot of more than that. It seamlessly integrates with the IOC container and allows you to use each feature of Spring in easier manner. The dispatcher servlet contacts handle mapping and view mapping. ठीक है, to controller call the processing request and receiving. Then the controller calls appropriate service name to set the processor model data. The service processor data returns the view name to the view name to the servlet. Dispatcher servlet then takes the help of the view resolver and picks up the defined view for the request. View resolver का ठीक है. Once the view is decided, it passes the model data and view, where it's finally rendered on the browser. Okay. हेलो जी, कौन देख रहे हैं? अब इसने ये चीज़ बोली है ना, डिस्पैचर सर्वलेट पर रिक्वेस्ट आई, यहाँ से गई हैंडलर मैपिंग पे, हैंडलर मैपिंग ने वापस करा रिक्वेस्ट से कंट्रोल मॉडल एंड व्यू, देन व्यू रिजॉल्वर पे गई, फिर डिस्पैचर सर्वलेट पे जाएगी, उठा के मॉडल पे गया व्यू और वो. अरे हेलो हेलो स्माइल भाई, कैसे हो यार? बहुत टाइम बाद. कैसे हो ब्रो? ऑल गुड? हाय सर, हाय, कैसे हो? आजकल दिन वाली लाइव में तो नहीं आ रहा मैं, मेरे को लगा भूल गए. कैसे हो ब्रो आप? यस, ऑल गुड. ओके, हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन ब्रो? कैसा चल रहा है सब? हु आर यू? हु आर यू? आप दिन में आते थे मेरी लाइव में, जितना मुझे याद है ब्रो. बेबी सेम नाम के कोई और तो नहीं हो? हाँ सॉरी, हाउ आर यू? अच्छा अच्छा, आई एम गुड ब्रो, आई एम गुड. आप बताओ. मैं वही कहा, हु आर यू कैसे बोल रहे हो? बोलता नहीं मैं इतनी जल्दी. That is by mistake. Yeah, I got it. No problem, bro. How are you? And how's your life going on? I'm paying request, ठीक है. What is the view resolver pattern and explain its significance? अरे यार, that allows the application that we choose technology for intuitive pattern that allows application that we choose technology for rendering data on the browser. Any technology like HTTP can be used as view. The view resolver has the information of different views. The controller returns the name of the view, which is then passed to the view resolver by the dispatcher servlet selecting the appropriate view technology, and then data is displayed. Very nice. Little bit bad. Why little bit bad? What happened? Default view resolver in Spring is internal resource view resolver.
default view resolver. 1 second. Default view resolver in Spring is internal resource. Little bit fight with friends. Acha, okay. But why? Like, why you fought with your friends? And I think it's fine. Like, little bit fight with friends is okay, but it should end at the end. You can say you should end the fight if they are your good friends. Control stereotype MVC annotation to define the controller player. What is this? I'm good bro. आप still लिख रहे हो who are you how are you को but I'm good. Can you create a REST controller without using the controller or REST controller notation? Hmm. Yes, you can create a controller without by annotating the Spring MVC controller using the direct component notation. In this case, the data mapping is handled then using the request mapping. ठीक है. What the hell? Ah, sorry, I'm sorry, I'm sleeping now. Okay, okay, it's okay, bro. It's okay. You can sleep, bro. I'll also go after a few minutes. I'm just reading one topic, so after that I will also go. You can sleep, bro. It's fine. We can talk tomorrow. ठीक है. What is a context loader listener and what does it do? Context loader listener. कितना बड़ा टॉपिक है ये? Different between request parameter path parameter. Request parameter path variable. ये तो हो जाएगा. Context loader पढ़ लेता हूँ. Okay, good night, bro. I'll also go and I'll talk to you tomorrow. हाँ. Thanks for joining. And जिसने भी like किया and subscribe किया, thanks. What are you doing? I'm just revising my topics ना for my interviews. So मेरे को बहुत like I need to get a job like very soon. So I need to study more right now. So I'm just revising and quite learning of my like coding topics. So I'm just reading like Java Spring Boot if you are heard of. So I'm just reading and learning those once again. So yeah. Okay, good night, bro. See you tomorrow. Tomorrow you come live. I'll try to come like in night time after 11 p.m. Like in daytime na, I don't usually come now. So I'll try to come at 11 p.m. or we can meet around 12 p.m. also. So I try to join at that time. You can check my shorts also, even if you don't like able to come to my live. You can check my shorts. The context loader. Okay, okay. Good night, bro. Good night. Take care. Sweet dreams, bro. See you tomorrow. Bye bye. Those in case the application context. So a developer need not to write explicit code to do great. In short, it is a dictionary case to boost our synthesis where Spring Bean resides. For a web application, there is a subclass called web application. The second application is tied to the lifecycle of the servlet context by using context listener. The servlet context from the web application can be obtained using the get servlet concept. Loads and create application concepts. अच्छा, loads and create application concepts कुछ कहता हूँ. Loads and creates
application context. So developer need not to write explicit code to create it. It is a listener that aids to bootstrap C. Because ठीक है ठीक है आज के लिए तो हो गया. चलो बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, कल मिलते हैं.